बैक एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सपर्ट्स की राय। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे इतना अच्छा सीनरी, इतने अच्छे पाइन ट्रीज एंड फॉग है, तो हम कहाँ हैं? तो हम हैं शूलिनी यूनिवर्सिटी में। और आज हम लेने जा रहे हैं इंटरव्यू यहाँ के डायरेक्टर का, डॉक्टर अमर राज जी। उसके साथ ही साथ हम इस यूनिवर्सिटी का वीलॉग भी बनाने वाले हैं, यानी कि हम पूरा का पूरा कैंपस देखने वाले हैं, स्टूडेंट से मिलने वाले हैं और फैकल्टीज से भी मिलने वाले हैं। बहुत से सवाल और बहुत सारे फनी मोमेंट्स भी होंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और साथ ही साथ इसका वीलॉग भी ज़रूर देखें। तो चलिए फिर चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। So we have with us the Director of Online Education of Shoolini University, Dr. Amar Raj Singh. Thank you so much, sir, इस शो में आने के लिए। Thank you for having me And here. we have a lot of questions and queries. आपसे हम आज सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। Sure. साथ में आपका ये ब्यूटीफुल कैंपस भी देखने वाले हैं। जी। So सर, इसी में आपके लिए मेरे पास बहुत बड़ा सवाल है। So सर, आपका ये फर्स्ट ईयर है इन ऑनलाइन एजुकेशन एंड यू मेड अ ग्रैंड एंट्री by promising first pay after placement in online degrees. Yes, तो sir. सर इसका क्या स्ट्रैटेजी है, प्लीज इसके बारे में बताइए। So the strategy behind this is we have a very strong foundation in our regular programs. Like we have a very strong curriculum which is based upon the inputs from industry, and we have a very strong tie-ups with the academicians from global universities. And secondly, we have a very strong placement cell for our regular courses, and then this thing helps in mitigating the risks for the student. Like student will take admission, and we promise that 50% fees needs to be paid after he gets placed. जब वो placement कर लेगा या उसकी placement हो जाएगी, तब उसको बाकी की फीस पे करनी है। अगर स्टूडेंट के लिए ये एक गारंटी हो जाती है कि अगर नहीं कर पाए तो मुझे नहीं देनी बाकी की फीस, तो ये हमारी तरफ से गारंटी है उसको। So मतलब आप ऑनलाइन डिग्रीज में भी प्लेसमेंट प्रॉमिस करते हैं? Yes, जो हमारा प्लेसमेंट सेल होगा, दैट बिकॉज वी आर इन द फर्स्ट ईयर, सो जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा बैच, तो हमारा जो प्लेसमेंट सेल है डेडिकेटेड, वो जो उन्हीं कंपनीज के साथ काम करेगा फॉर आवर ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल। तो सर आपने ऑनलाइन एजुकेशन में आपके पास बहुत सारे प्लेसमेंट पार्टनर्स भी हैं, एरिक्सन, HUL एंड LG। तो सर आप ये सारे जो प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं, ये ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए भी सेम है? एंड अगर आप किसी बच्चे की स्टोरी शेयर करना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा जो यहाँ से प्लेस्ड हुआ हो। सो बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि हमारी जो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल, तो जो हमारे ऑफलाइन में रेगुलर डिग्री प्रोग्राम्स में प्लेसमेंट्स है, दे आर क्वाइट गुड, आई मस्ट से दे आर एक्सीलेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हम लोग ऑनलाइन डिग्रीज में भी इसी तरह की प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज जो हमारे हायरिंग पार्टनर्स हैं वो they are working with on this for our online placements with us. We are working with them so that whenever our next year, whenever our batch passes out, so we are working with our regular program placement partners for our online degree programs. तो जब हमारा बैच पास आउट होगा, for suppose MBA का बैच पास आउट होगा, which started in April 2023, तो वो जब पास आउट होगा तो they will also get a chance to sit in the placements with the regular students as well. Obviously the offer will depend upon the placement and what value student has gained through his hard work. एंड सर कोई स्टोरी अगर आप शेयर करना स्टोरी, चाहें? हमारा एक स्टूडेंट प्लेस हुआ था हिल्टी में. So he was from a very humble background. His parents were from village. So he studied in Hindi medium school. So but he was hard working. He got good mentorship under our experienced faculty, and he got placed in one of the topmost companies, that is Hilti. So सर अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, और मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी होल्ड्स अ लॉट ऑफ अप्रूवल्स। तो सर उसके बारे में बताइए कि इन अप्रूवल्स की क्या इम्पोर्टेंस है? जैसा कि मैंने बताया आपको, ऑनलाइन डिग्रीज के लिए जो अप्रूवल्स हैं, दे आर बेसिकली मैंडेटरी.
अगर आप कोई भी डिग्री शुरू करना चाहते हो ऑनलाइन, तो यूजीसी इज अ बॉडी which takes care of your कंप्लीट बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी it कैसे takes care of everything. Basically we are regulated by UGC DEB's 2020 regulations. तो Okay. उनकी regulations में माइन्यूट से माइन्यूट चीज की भी रेगुलेशन है. आपका एचआर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके टीचर्स कितने होने चाहिए, आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए. सो बेसिकली जो भी गवर्नमेंट की रेगुलेशन होती है वो क्वालिटी को एक चेक करने के लिए चीज होती है. अगर हम ऐसे अलाउ कर देंगे तो स्टैंडर्ड लो हो जाएगा. सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मैंडेटरी, जरूरी है, इसके बिना तो हम शुरू ही नहीं कर सकते. जी. और सेकेंडली इट्स यू नो इट चेक्स द क्वालिटी ऑफ दिस होल सिस्टम ऑफ ऑनलाइन डिग्रीज. एंड सर रैंकिंग्स की बात हुई तो कौन कौन सी रैंकिंग है आपके पास? तो रैंकिंग्स की जहाँ तक बात है, हम NIRF जो हमारा इंडियन रैंकिंग सिस्टम है उसमें कंसिस्टेंटली हम पिछले 3 साल से टॉप 100 में हैं. एंड दिस ईयर वी जंप्ड टू 73rd पोजीशन. सो जहाँ तक हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग्स की बात है, दैट इज टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स 2023 में वी आर द नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, नंबर 2 overall, and we lie in the band of 351 to 400 globally. In citations, we rank 39th in the world, and citation means how much influence our research has. मतलब हमारे जो publications हैं उनको दूसरे researchers कितना cite करते हैं. And in engineering, we are number 2 in India. In physical sciences, number 1 in India. And for both of these streams, we lie in the band of 201 to 250. सर तो अब पूरा दुनिया AI को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड वी सी दैट शूलिनी यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो यूजिंग AI. आप कोई फर्स्ट यू करियर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. So like I discussed about Siqandar, our AI tool. So we provide our career support using these AI tools. The students uses these tools for his development of communication skills, और वो टीचर अपने क्लासरूम टीचिंग में यूज करता है, वाइवास कंडक्ट करने में यूज करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज ऑल्सो यूज्ड for preparing him for interviews before the placements. तो इस तरह से हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम सपोर्ट स्टूडेंट को कर रहे हैं using the AI to get his placements and all, to get him prepared for the placements basically. So sir, आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है in AI, आप काफ़ी कर चुके हैं इसमें काम, तो how Shoolini University is using to improve online degree programs? हाँ जी. So first of all AI का यूज़ हम शूलिनी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन में यूज कर रहे हैं. जैसे कि टीचर्स जो इसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जो अपने कोर्सेज क्रिएट करने आए, तो वी यूज AI टूल्स फॉर मेकिंग देयर वीडियो लेक्चर प्लान्स. AI इज हेल्पिंग देम इन देयर ट्रांसक्रिप्ट्स, इन देयर कंटेंट क्रिएशन, एंड we are also using it in video editing. Like we use AI to enhance the audio, and we are using some AI tools for getting our video edited. So this is the content creation parts. So secondly, we are using it to create personalized learning catering to each student's need. जैसे कि कोई learner है, उसकी जो ability to learn is slow. So कोई लर्नर है उसकी एबिलिटी है वो जल्दी ग्रैस्प कर लेगा, तो टीचर अपने असाइनमेंट, क्विजेज, असेसमेंट, इनफैक्ट वो अपने जो कंटेंट है उसको भी उसके लिए टेलर कर सकता है. तो ये सब हम कर रहे हैं AI की यूज में. एंड प्रीवियसली आई टोल्ड यू वी आर यूजिंग इट फॉर कम्युनिकेशन स्किल बिल्डिंग, वी आर यूजिंग इट फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन. तो वी आर यूजिंग AI क्वाइट अ लॉट. एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हैं AI की, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो स्टूडेंट्स की, टीचर्स की. सो हम लोग आई कंडक्ट सम वर्कशॉप्स फॉर वेरियस स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी to implement this basically generative AI in the field of education and research.
if we talk about the quality of education, learning management system is a very crucial part, very important. अगर हम online degrees की बात करें, तो sir, how good is the learning management system of Shoolini University online education? Before coming to online education, you will be surprised to know that in a regular degree program, we introduced Moodle-based learning management system in 2012, and it was inaugurated by our late former President of India, APJ Abdul Kalam. Oh. So it is called eUnif. So we have been using it since 2012 in our internal teaching. हमारे quizzes, assignment, assessments, summary of videos, external learning resources, वो सब हम हमारे टीचर्स प्रोवाइड करते थे since 2012 on this LMS called eUnif. Now, because of that, in 2020 when COVID came, जब COVID हुआ 2020 में, we were the first university to get up and running online the very next day. हम पहले से ही सब तैयारी थी हमारे पास सब कुछ था. हम बस जैसे ही हमारा वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, नेक्स्ट डे से वी वर ऑनलाइन एवरीथिंग, और वी डिड एग्जाम्स एंड एवरीथिंग सीमलेसली. तो स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी? नहीं, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी. हमारी डेडिकेटेड टीम ऑलरेडी है आईटी की जो इस पे काम करती है, तो उनका पूरा सपोर्ट था. तो बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो ऑनलाइन का एलएमएस है, सो वी डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम in creating this LMS for our online degrees, and which obviously got approved by the UGC, which speaks volumes of its quality and the technological advancements we have. We have not tied up with any third party to source the LMS, जैसे कि और यूनिवर्सिटीज करती हैं. हमने खुद किया इस पे. Okay. So sir, how do you differentiate between the online degree and regular degree of Shoolini University? Okay. Generally speaking, regular and online में जो difference है वो ये रहता है कि online degrees are more affordable and more flexible. जो working professionals हैं, जो किसी reason से नहीं कर सके continue, वो भी कर सकते हैं इसको. Offline में क्या होता है कि आपका कैंपस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, पर्सनल सपोर्ट होता है टीचर का, और इस तरह से दोनों की अपनी खासियत है. स्टूडेंट अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी उसको कन्वीनियंस है, दोनों में से कोई भी ले सकता है. हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं स्पेसिफिकली, तो वी हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ पीपल हु आर academic counselors, then we have our course mentors, then we have our program coordinators, then apart from that जितने भी हम कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, जैसे हमारे प्रोग्राम्स हैं BBA, MBA, BA जर्नलिज्म एंड मास कॉम, MA इन इंग्लिश लिटरेचर, तो हर एक के अपने कोर्सेज जो हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके हर एक का टीचर है. तो टीचर या कोर्स कोऑर्डिनेटर के अंदर मेंटर्स हैं हमारे पास, जो स्टूडेंट्स के साथ टच में रहते हैं, and they get the meeting between the subject matter expert and the students arranged. So we are quite well in this. I think then I can also say that we have our own studios. हम content अपना बनाते हैं tailor to the students' needs. हम English में बना रहे हैं. Now we are also translating our content, creating in Hindi also. Slowly हम हमारे लर्नर्स जैसे हिंदी में चाहते हैं, तो हम वो काम भी कर रहे हैं. काफी स्टूडेंट्स का होता भी है सवाल कि क्या हमें लेक्चर्स हिंदी में मिल सकते हैं. हमारा जो पर्सनलाइज्ड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है, तो उसमें टीचर्स जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, तो उनके लिए इंग्लिश में रहेगा कॉन्टैक्ट, और जो दूसरे हैं उनका हिंदी में, इंग्लिश में बेसिकली, स्पोकन हिंदी आज की मॉडर्न डे हिंदी. सो इस तरह से हमारा वी हैव अवर फुल टीम टू सपोर्ट आवर स्टूडेंट्स. So sir, with online education now it is possible कि अब स्टूडेंट्स को अराउंड द वर्ल्ड की फैकल्टी का एक्सपीरियंस मिलता है, एंड यूनिवर्सिटीज़ भी इस पे काम कर रही हैं. इंडियन फैकल्टीज ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल फैकल्टीज भी लेकर आ रही हैं. तो क्या शूलिनी यूनिवर्सिटी भी कुछ ऐसा ऑफर कर रही है अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए? Shoolini University already has tie-ups with 250 plus global universities. As far as our regular programs are concerned, and for online programs
We have tied up with the international universities as well as top CEOs and CXOs of big MNCs around the globe to bring the international academic as well as the industrial experience direct to the students to their homes. So they will learn from top experts directly in our Shoolini Online. तो दैट मीन्स कि अब शूलिनी यूनिवर्सिटी में आपको ऑनलाइन एजुकेशन में भी नेशनल प्लस इंटरनेशनल फैकल्टी मेंबर्स का एक्सपीरियंस मिलेगा, विच डेफिनेटली एनहांस योर लर्निंग। जी। एंड सर यहीं पे फैकल्टीज एंड इसके बाद लर्निंग की बात होती है और इसी के साथ आता है जॉब ऑफर्स का। तो कई लोगों का ये कहना है कि जॉब जो मिलती है वो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होती है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए एंड ऑनलाइन डिग्री होल्डर्स के लिए, तो ऐसा कुछ है? सो शूलिनी यूनिवर्सिटी इंश्योर्स दैट चाहे हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हों चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हों, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और हम ये इंश्योर करते हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसा कि मैंने बताया कि AI ड्रिवन जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं उसके थ्रू हम उनको प्रिपेयर करेंगे। So providing the AI support and various learnings from top CEOs, CXOs, so they should gain experiential learning because of that. So we, as our batch progresses towards placements, the first batch which will progress toward placement is which started this year. So after 2 years, it will progress towards placement. So in these 2 years, our main focus is on providing skills and making them industry ready. So, so because of this, we are quite confident we'll bring in the companies. We are providing pay after placement, and we are quite confident that our students will get placed because of all this. So यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिकेशन के लिए हमने बहुत सारे अप्रूवल्स की बात करी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको कोर्स प्रोवाइड करती है, बीट ऑनलाइन, रेगुलर और डिस्टेंस, राइट? अब इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज NIRF रैंकिंग। तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है सर? So NIRF ranks an university based upon various parameters. So first one is teaching, learning and resources. That includes number of students and teacher-taught ratio and such kind of things. Second is research and professional practice. Basically, it includes the research papers published and other such factors, and how many tie-ups we have with industries and other things. Then third one is your graduation outcomes. Then outreach and inclusivity, and the perception of university. That is, how does university is perceived by others, academicians and other people, other universities, peers. सर एक क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स का अक्सर हमसे पूछते हैं कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का कौन सा कोर्स सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो शूलिनी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एजुकेशन में आपका बेस्ट कोर्स कौन सा है या फिर बेस्ट फेमस कोर्स कौन सा है? ओके, इन ऑनलाइन एजुकेशन जो हमारा फेमस या बेस्ट कोर्स आप कह सकते हो, MBA and BBA are most sought after courses in Shoolini University, followed by Bachelors of Journalism and Mass Communication, MA English Literature. So ये हमारे पॉपुलर कोर्सेज हैं ऑनलाइन में, और रेगुलर में तो और भी कोर्सेज हैं जैसे BTech, CSC, BCA, वो सब रेगुलर में। एंड सर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो फिर एक चीज़ जो बच्चों को नॉट ओनली इन ऑनलाइन एजुकेशन बट हर जगह बच्चे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले चाहते हैं कि वहाँ का एलुमनाई कनेक्ट कैसा है, स्टूडेंट्स कैसे पास आउट हुए हैं, कहाँ अपनी जॉब्स कर रहे हैं, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलता है। तो डू यू ऑफर एल्मा कनेक्ट टू द स्टूडेंट्स? या जो हमारे बेसिकली रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो गए हैं, सो वी हैव आवर एलुमनाई नेटवर्क, वी हैव डेडिकेटेड टीम who looks after connecting with these alumni, and alumni meets होती हैं, तो those students are invited, and so currently we are in our first year in online, so this practice will be followed in similar way in our online students, for our online students also. Okay.
एंड सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर करे। एंड अब हम मिलने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इनोवेशन एंड मार्केटिंग मिस्टर आशीष खोसला जी से, जिन्होंने AI ड्रिवन इस यूनिवर्सिटी को बनाने में काफ़ी बड़ा हाथ है उनका। तो चलिए अब उनसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच पूजा। थैंक यू सो मच सर। सो वेलकम सर। थैंक यू पूजा। एंड आपके बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा सुन लिया, काफ़ी तारीफ सुन ली। सो हमने भी सोचा कि अब आपको इस शो पे बुलाया ही जाए। तो सर, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ इनोवेशन एंड मार्केटिंग, एंड इसमें क्या होता है सर? और आप पहले तो इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करिए कि हाउ इट इज़ हेल्पिंग स्टूडेंट्स। ओके, सी देखिए, द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी इज टू इम्प्रूव टीचिंग, लर्निंग एंड इनोवेशन in the entire ecosystem that it operates in, right? So जो इनोवेशन का रोल है वो तो एक है कि यूनिवर्सिटी में रिसर्च और इनोवेशन लेके इसको दुनिया तक लेकर जाना, ठीक है? So as you might be knowing, Shoolini University is a leader in innovation. We are one of India's top research universities. In fact, जहाँ तक रिसर्च का सवाल है और इनोवेशन का सवाल है, हम दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी के साथ मुकाबला करते हैं। हम आईवी लीग के साथ, जो हमारा रिसर्च इंडेक्स है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च, आईवी लीग की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बड़ी बड़ी हैं, उनके साथ भी हमारा मुकाबला किया जा सकता है। एक टाइम्स हायर एजुकेशन है जो गोल्ड स्टैम्प है, जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो वर्ल्ड कप जो होता है, तो वैसे टाइम्स हायर एजुकेशन है जो शूलिनी यूनिवर्सिटी को दुनिया में 31st रैंक करती है साइटेशन इंडेक्स के लिए, जो कि रिसर्च क्वालिटी का एक प्रतीक है। सो दैट्स द रोल ऑफ इनोवेशन। द रोल ऑफ इनोवेशन इज ऑल्सो कि जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, मतलब आपको पढ़ाते हैं, तो हमें ऐसे नहीं पढ़ाना है कि जैसे 100-200 साल पहले पढ़ाते थे कि क्लास में बच्चा जाए और सो जाए, राइट? या फिर रोट लर्निंग हो। हमें पढ़ाना ऐसे है, और वो भी ऑनलाइन ऐसे पढ़ाना है कि एक बार बच्चा आए तो उसका इंटरेस्ट, स्टूडेंट का इंटरेस्ट रहे सब्जेक्ट में, राइट? और वो जो स्किल्स हैं वो जेन्युइनली डेवलप कर सके। सो द इम्पार्टिंग ऑफ स्किल्स in the relevant segment to the relevant student in that particular profession is also what innovation in a university does. So उदाहरण के लिए अगर हमारा MBA है, MBA में communication skills, analytical skills, ये बहुत ही ज़रूरी है। So part of the innovation is seeing कि दुनिया में क्या चल रहा है, कि हम अपने बच्चों को उससे एक्सपोजर दें और वो वैसी कम्युनिकेशन कर पाएँ, ठीक है? इसी तरह से अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, MA कम्युनिकेशन की या MA इंग्लिश की, या हम BCA कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, तो उसमें हम कैसे टूल्स बच्चों के सामने रखें जिनसे वो लर्न करके दुनिया के बेस्ट से कम्पीट कर सके, राइट? और आजकल द वर्ल्ड इज चेंज्ड। एक ज़माना होता था आपको IIT IIM में जाना ज़रूरी था जॉब्स करने के लिए, लेकिन द वर्ल्ड इज चेंज। इट इज़ योर स्किल सेट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड कम्पीट विद एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड। अब मतलब आप किसी के भी साथ जा सकते हैं, बट आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए। दैट इज व्हाट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दैट्स राइट। सी, दे आर जस्ट टू पूजा, जस्ट टू ऐड टू दैट, अगर आपके पास डिग्री हो और स्किल्स हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एग्जैक्टली। सर, इस यूनिवर्सिटी को, शूलिनी यूनिवर्सिटी को AI ड्रिवन बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है जी। दैट्स व्हाट वी हर्ड। या सो हाउ? सो अब जहाँ मैं शुरू करूँगा तो मुझे रोकना मुश्किल होगा, तो आप बीच में मुझे बता दीजिए आशीष रुक जाइए। लेकिन मैं केवल एक ही चीज़ की बात करूँगा, वो है हमारा AI में हमने बहुत काम किए हैं। एक खास चीज़ की बात मैं करूँगा जिसका नाम है Siqandar.ai, और उसका स्लोगन है कि वी वांट यू टू बी द सिकंदर ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब हम आपको बनाना चाहते हैं कम्युनिकेशन का राजा। और इसमें हमने क्या क्या किया है कि हमने जब क्वेश्चन पूछता है तो आप कंप्यूटर को आंसर करते हैं, और कंप्यूटर देखता है कि आपने ठीक बोला कि आपने गलत बोला। ये तो खैर साधारण चीज़ है, दिस हैपेंस फ्रॉम स्पीच टू टेक्स्ट। बट व्हाट इट आल्सो डज इज इट डज अ लेयर ऑफ हाउ डिड यू स्पीक। वर यू स्पीकिंग टू फास्ट और वर यू स्पीकिंग टू स्लो? वर यू साउंडिंग अपसेट? वर यू यूजिंग टू मेनी फिलर्स? फिलर्स का मतलब वर्ड्स दैट यू शुड नॉट यूज, लाइक अच्छा, all these words. Or were you fluent throughout? Were you using pauses effectively? So all these things, for example, जो
अमिताभ बच्चन को सिखाए थे जब वो एक्टिंग करने आए, वो हमारा सिकंदर आपको सिखा सकता है। और तीसरी चीज ये भी बोलता है आपकी विजुअल कम्युनिकेशन कैसे होती है। क्या आप फ्राउन कर रहे हैं? अगर आप इंटरव्यू देने जाओ और फ्राउन करके बोलो, आप ठीक भी आंसर दोगे तो यू नो द इंटरव्यू विल से सॉरी, राइट? सो इज योर फेशियल एक्सप्रेशन ओके? इज योर बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव? आर यू स्लाउचिंग? आर यू गोइंग टू बैक? Or are you perfectly, in a positive, strong, confident pose? So all these things are actually driven through AI using Siqandar, and our students can use Siqandar to learn this and gradually improve during their, 2 to 3 years with Shoolini University. साथ में एक और चीज़ है कि, अच्छा हो चाहे बुरा हो, it's a reality that you also need to speak good English in some jobs. Yeah. Or that's why we have Siqandar for English. And Siqandar for English does the same thing. It virtually does a total kaya kalp of somebody speaking in English. And the example of that is Devinder, who's now a tech lead. He couldn't speak, he was very, very unsure of his English speaking skills. But he worked on Siqandar, और रोज उसको करना पड़ता था कि रोज बोल के टेस्ट करना पड़ता था. And I was surprised. One day he was speaking as fluently as I. And that took him around 3 months. So that is a very clear example. Maybe you can speak to him as well. Hi, I'm Devendra Thakur, working in Ardo AI as a senior software developer. And while I was working in Ardo.ai, I got opportunity to work on a project called Siqandar. So Siqandar basically helps us to improve our communication skills. So I want to tell you about my experience. So in Siqandar, it helped me a lot to improve my communication skills while I was developing this product. So I got opportunity to know about different parameters or skills that we use while we have to communicate. So my target was to improve my fluency basically. So as a developer, while I was working in this product, so we used to record ourselves and then talk about a topic for 2 minutes, and then Siqandar gives us some analytics on 3 V's. So basically Siqandar provides us analytics on 3 V's. 3 V's means verbal, visual and vocal. So in verbal we have to talk about for 2 minutes, and then Siqandar gives us an analysis on how we talked, whether we were using fillers or pauses, and in vocal how was our voice tone and voice emotions, and in visual Siqandar gives us analytics on our smiling index and visual variance and positive and negative emotions. So at the same time Siqandar gives us suggestions how we are doing in our communication skills. So using those suggestions, what we can do, we can try another attempt and we can try to improve using those suggestions. So Siqandar helped me a lot while I was developing this product. I used to record myself and see analytics, and on the basis of those analytics I used to do another attempt, and then I try to improve in all those parameters in next attempt. So this is how I improved my communication skills and accent within 3 months. And also while I was working on this product, I was a developer. Now I am working as a tech lead, and I am leading 8 people in my company. So sir, आप ये Shoolini University, how you differentiate Shoolini University from other universities? See, Shoolini University is a young university. So we were formed in 2008. But in this very short time, we have established ourselves as one of the world's top universities. So NRF में तो हम हैं ही top 100 में. मैंने आपको बोला THE और QS ये गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं. ये IPL की तरह नहीं है, ये वर्ल्ड कप क्रिकेट की तरह है. And in both of these, we are India's #1 private university. So we are ranked 351 to 400 in THE 2023, and we are ranked between 750 and 800 in QS World Rankings 2024. So given our standing in terms of rankings, the advantage to the student is
कि कोई भी दुनिया में ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको इंटरव्यू नहीं देगी, right? That is the standing of the university. Now it is up to you as a student to equip yourself to be able to cross that barrier of the interview. And I'm assuming that the facilities that we offer, the teaching that we offer you, the skill set improvement that we'll offer you will enable you to actually go and cross that barrier of actually getting that job through that interview. So I think हमें और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ये फ़र्क है कि A, because of international ranking, international companies and local companies look at us positively, and B, we actually train the student to build the right skill set to get the specific job. And it's the same for online education as well. We actually feel that to some extent we use more technology and more focus, and if I may say so, even better teachers in online education than in other forms of education. And the reason is very simple. I'll give you an example. Ashish Khosla, who's teaches a course on creativity, right? When she goes into her offline class, she used to give case study examples of people who've done great research or great innovation across the world, right? And students then look at those case studies and understand what they do. But when she teaches an online class, she actually brings those people in the class live, because online gives you the power of bringing them live. So there is a famous GE innovator जिन्होंने कि जो MRIs हैं उनको चिल्ड्रन फ्रेंडली किया, और जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस में आप इनोवेशन की देखोगे उनका एग्जाम्पल दिया जाता है, राइट? शी गॉट Dowd live into a class. She got one of the top musicians live into a class. She got one of the top poets and writers live into a class. She got a top scientist, a Royal Society the International Royal Society scientist into the class. All that is possible through online. तो हमारे पास ability है बच्चों को one-on-one basis भी guide करने की. He even has planted this रुद्राक्ष tree. सामने आप देखेंगे ये पेड़ है, और बोलते हैं कि इंडिया में रुद्राक्ष पेड़ नहीं उगता है, ऐसा बोलते हैं. लेकिन हमारा ये जो रुद्राक्ष है वो हर साल त्रिकोण रुद्राक्ष पैदा करता है. त्रिकोण, हाँ. और क्योंकि अब्दुल कलाम जी ने ये दिया है तो हमने एक गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड रखा है. इसको गोल्ड के फ्रेम में जो बेस्ट टीचर्स होते हैं हर साल के, उनको हम ये वाला रुद्राक्ष देते हैं. सो दैट्स कॉल्ड द गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड टू शूलिनी यूनिवर्सिटी टीचर्स, which is in remembrance of APJ Dr. Abdul Kalam. Also, sir, how do you ensure कि आपके सभी के सभी students placed हो? Okay, see that's a very good question. अगर आप मुझे स्टूडेंट की प्लेसमेंट से एक महीना पहले बोलो कि अब इस स्टूडेंट की प्लेसमेंट करा दो, तब तो I'm not a magician, right? So what we do is, before we take a batch, we tie up with companies in relevant industries. So we have tie-ups with companies in six industries. These are banking and finance, food technology and biotech, business process outsourcing, telecommunications, retail, and hospitality services. So because we have tie-ups with these companies, we know in advance what kind of skills they want us to build in the students. For example, banking and finance tells us that they should be good in banking and finance. They should be able to operate on Tally. They should be able to know the latest trends, like for example cryptocurrency or stock market में क्या हो रहा है, right? So we make sure our students are capable of handling those parts of theory, and we also ask them what kind of skills they want. So they've communicated this is the level of communication skills or analytical skills कि आपको data में Excel आनी चाहिए. So knowing all this, we make sure our student is equipped with that. Also understand ये companies आ ही रही हैं placement में. So what we do is the company is coming for placement, our student is equipped, we make sure they are able to find a match. आपको ये भी जानना चाहिए पूजा जी कि बहुत सारी कंपनीज ये बोलते हैं कि हमारे पास ओपनिंग्स तो हैं, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट्स ही नहीं, राइट? कई बार जैसे बीपीओ सेगमेंट है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेगमेंट है, और इवन द बिग फोर अकाउंटिंग कंपनीज जो हैं, राइट, दे आर नॉट कम्पीटिंग विद इन इंडिया फॉर टैलेंट, राइट? अगर इंडिया में हम स्टूडेंट नहीं देते हैं जिसको वो हायर कर सकें, तो वही जो टैलेंट है वो फिलीपींस से भी हायर कर सकते हैं या मेक्सिको से भी हायर कर सकते हैं.
या फिर साउथ अमेरिका की और जो नेशंस है वहाँ से हायर कर सकते हैं। मैंने अभी एक कंसल्टिंग प्रोजेक्ट भी किया था किसी के लिए, जो 7 सेंटर्स थे और 7 में से वो लोग ढूंढ रहे थे, राइट। सो इट्स नॉट एज ए वे कंपीटिंग आपस में शूलनी में, या शूलनी वर्सेस IIT या RMIT, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर एक्चुअली एज अ कंट्री competing in this global workforce arena, and we need to make sure that our students have the skills to get those jobs, नहीं तो वो वहाँ चले जाएंगे। So sir, you also have mentioned about global opportunities and universities, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। See, आप ऐसे है, as I just told you, Shoolini University is a leading global university, right? Because of that, we have tie-ups with many universities. If you do your degree with Shoolini University, many universities will consider you for a further degree abroad, right? And we have tie-ups with almost every country, right? Right from US, Canada, Britain, Australia, New Zealand, Taiwan, Germany, and such types. Also, a lot of universities accept Shoolini University students after the first year and second year, and they give the credit for the first year and second year into their courses. So इस तरह अगर आप मान लो कनाडा जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल, राइट, कनाडा इफ यू वांट टू गो, आपको 4 साल लगते हैं। अगर आप 2 साल शूलिनी में कर लो तो आप 2 साल के बाद कनाडा की यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। एंड दिस इज ट्रू बोथ फॉर आवर ऑफलाइन एंड आवर ऑनलाइन डिग्रीज, राइट। सो अगर आप फॉर एग्जांपल अभी आप सोच रहे हो, घर में बैठे हो और आपको 1 साल लगेगा अभी बाहर जाने के लिए और आपने अभी अपनी डिग्री नहीं की है, सो आप 1 साल तो शूलिनी में लगा ही सकते हो और उसके बाद ट्रांसफर लेके आप अपनी कंट्री ऑफ प्रेफरेंस में जा सकते हो। सो दैट इज वन एग्जांपल व्हाई वेस्ट अ ईयर, राइट। यू कैन यूटिलाइज दैट ईयर एट शूलिनी ऑनलाइन। Amazing. Yeah. And sir, lastly, what is the mission and vision of Shoolini University Online Education? So Pooja, that's a very interesting question. Before I answer that, I will go back to an imperative for India. India में GER, gross enrollment ratio, आज के डेट में 26% है, राइट। अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री से इसका मुकाबला करें तो दैट इज टिपिकली ओवर 70 और 80%, मतलब 70 से 80% बच्चे हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज डिग्री लेकर आते हैं। अगर आप चाइना से भी कंपेयर करें तो उसका भी 55-60% है। सो एक इम्पेरेटिव है भारत के लिए कि हमको अपना GER 50% तक लेकर जाना है, राइट। इसमें हम सोचते हैं कि ऑनलाइन का मेजर पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी काम कर रहे हैं, राइट। सो ऑनलाइन गिव्स देम द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड लर्न साइमल्टेनियसली, व्हिच इज अ बिग फैक्टर फॉर इंडिया, बिकॉज एवरीबडी कांट लीव देयर जॉब एंड लर्न, राइट। दूसरी चीज ये है कि अब समय आ गया है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का। अब मेरा एग्जांपल लीजिए, अब मैं पुराने ज़माने का हूँ तो उसमें मतलब पुराना ज़माना तो नहीं, एटलीस्ट आई एम 30-40 years old, मोर देन दैट एक्चुअली, बट मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के बाद मैंने MBA किया IIM कैलकाटा से। उसके बाद मैंने बस काम किया, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, राइट, बिकॉज दैट लास्टेड मी फॉर 30-35 years, दैट वाज फाइन, दैट वाज दैट टाइम। टुडे बिकॉज टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एवरी डे, यू नीड अ न्यू स्किल सेट every 5 to 7 years. तो आजकल कॉन्सेप्ट हो गया है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का। अब जब आप करते हो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात, ऐसे तो नहीं है कि आप बीच में छोड़ के चले जाओगे, आपकी शादी हो रखी है या होने वाली है और आप बोलोगे ओके जॉब टाटा बाय बाय, मैं तो चली हूँ पढ़ने के लिए। सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज पॉसिबल ओनली थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन। सो व्हाट Shoolini University wants is, we want to educate a large number of Indian students and make them competitive in the global workforce. हमारा ये मानना है कि by 2040-45 इंडिया में 400 मिलियन से अधिक workforce eligible लोग होंगे, which will be more than any other place in the world, right? Particularly with the aging population in China. So हमारे पास opportunity है कि किसी को दुनिया में कहीं भी कोई भी स्किल काम कराना हो वो इंडिया आए, राइट। तो इसलिए शूलिनी यूनिवर्सिटी का इंपेरेटिव ये है कि उन 400 मिलियन लोगों में से जितने को भी हम ट्रेन कर सकें, राइट, उतनों को हम करेंगे ट्रेन, एंड वी विल मेक देम केपेबल ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स। विद दैट इन माइंड वी हैव डन 2 very important things. The first is
we have priced the fees in a way that anybody can study at Shoolini University. A lot of people come to me and say, why did you price online so low? And the reason is very simple. क्योंकि मैं एक भारतवासी हूँ और मैं चाहता हूँ कि 20 साल के बाद भारत compete कर सके दुनिया की किसी भी country के साथ employment और skill set के बारे में. साथ में हम pay after placement भी दे रहे हैं ताकि बच्चे को पता चले, student को पता चले कि we are so sure about our program that we have pre-existing relationships with employers and areas of business concern जहाँ पे उसको job मिल सकती है, right? So that's what we do. Thank you so much, sir, ठीक है. for this insightful session, and I hope we'll meet again. ठीक है, Pooja. I'm sure we'll meet again, and it's very nice speaking to you and speaking to your audience there. Thank you. Thank you. Thanks a lot.